Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. Hello guys, I'm Dhiraj and I welcome you all in the Testbook.com, and I'm here to provide you the best I have. So I can see that few people have already joined. So those who have joined, they can mark their attendance by hitting on the like button, right? So बच्चा पार्टी आज हम लोग शुरू करेंगे. That is what production technology. Productions के questions लेकर आया हूं, and that I want to tell you कि आज जो सेशन होगा बेटा, ये टोटली जो सेशन होगा बेसिक कंसेप्ट, बेसिक डेफिनेशन और थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव और 4-5 न्यूमेरिकल्स होंगे. एंड टुमारो सेशन विल बी as per the standard of SSC JE Mechanical, मतलब वही informative questions, numericals, formula based question and basic concept questions, right? So ऐसे 4 कैटेगरीज में हम लोग क्वेश्चन कवर करेंगे. किसके बेटा? प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के. एंड वन मोर थिंग दैट आई वांट टू लेट यू नो कि प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में मतलब मटेरियल साइंस जो होगा मैं उसको इसके बाद लेकर आऊंगा. ओके, सो आई कैन सी कुछ लोग ज्वाइन कर चुके हैं. सो बच्चा पार्टी, वन मोर थिंग दैट आई वांट टू लेट यू नो कि दैट if you are interested in SSC JE Mechanical live coaching, then my dear you can join the batch. You know, आप batch join कर सकते हो बच्चा पार्टी. And in that batch, what you are going to get, बच्चा पार्टी क्या मिलेगा आपको? You will get what my dear 125 plus test. You will get PDF notes. You will get 7,000 plus practice questions, 100 plus live courses, right? And अब जुगाड़ काम की बात सुनो. That if you want to join it, you can join the batch by फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म. तो लिंक कहाँ मिलेगा बेटा? लिंक मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में. एंड जब भी आप बैच खरीद रहे होगे बेटा, सो जस्ट यूज माय कोड, दैट इज व्हाट धीरज डी. माय डियर, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कोड यू विल गेट डेफिनेटली 20% ऑफ. आपको 20% ऑफ मिल जाएगा. ओके, एट इंस्टेंट, उसी टाइम पे, राइट? सो 20% प्राइस पूरी लेस होके आपको मिलेगी. ओके, एंड और अगर आप इंटरेस्टेड है लाइक giving lot many mocks, then my dear you can explore the Testbook Pass which is available in the website as well as in the app. App कहाँ से डाउनलोड करना है बेटा? Google Play Store से, Apple Store से भी हो जाएगा. And we have one more app that is what current affair का, वो भी काफी अच्छा है, वो उसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो on the same channel, right? And बच्चा पार्टी, इस Testbook Pass आपको मिलेगा, that is what mega sale offer is going on and you are getting it just for ₹299. In addition to that you are getting access to the 100 plus courses, right? That will be free of cost. ठीक है? तो यहाँ पे बहुत सारी मॉक्स वेबसाइट पे एंड ऐप पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है. तो ऐप डाउनलोड करना कंपलसरी है, सो दैट यू कैन एक्सप्लोर और यू कैन गिव द फ्री मॉक टेस्ट व्हिच इज अवेलेबल इन द टेस्ट बुक. ओके, एंड अगर आप दैट नेशनल स्किल क्विज के लिए रजिस्टर करना चाहते हैं तो बच्चा पार्टी आप रजिस्टर कर सकते हो. लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको इस वीडियो की. एंड उससे मिलेगा कि आपको इंटर्नशिप मिल सकती हैं, जॉब ऑफर्स मिल सकते हैं. एंड वन मोर थिंग दैट आई वांट टू ऐड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी कॉलेज प्लेसमेंट्स में आपको इंडस्ट्री एक्सपर्ट से मेंटरशिप भी मिल सकती है, राइट? एंड यू आर गोइंग टू गेट व्हाट माय डियर एक्सेस टू द यूनिवर्सल वन एंड ओनली कॉम्बो टेस्ट बुक पास फॉर अ कंप्लीट 1 year. ओके, and if you are interested kind of professional certification, then my dear you can acquire the professional skills which is required. And I already told you that digital marketing is going to boom in the field right now. जो current scenario में digital marketing, I think it's work like in a what my dear? Work like in a what my dear? It's like in a boost your resume as well as your career. So बच्चा पार्टी आप एक certification ले सकते हैं by Testbook. Data entry पे भी, web development, Python programming which is very necessary for the artificial intelligence as well, right? WordPress development में ले सकते हैं बेटा. Advanced Excel लाइक अकाउंटिंग अगर आप करना चाहते हैं तो बेटा वहां पे भी काफी ज्यादा काम में आ जाता है. ओके, सो ये तो रहा बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज एंड ऑफर्स फॉर यू गाइस बाय द testbook.com, राइट? बच्चा पार्टी, अब हम क्या करेंगे दैट वी आर गोइंग टू स्विच अप आवर मेन कंटेंट. ओके, योर वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड इवनिंग. अब हम शुरू करेंगे अपना मेन कंटेंट, दैट इज नन अदर देन व्हाट माय डियर टुडेस क्वेश्चंस. ओके, सो कैन वी बिगिन नाउ? बच्चा पार्टी शुरू करें. सो हियर आई गो, चलते हैं शुरू. बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको जुगाड़ से मिल जाएगा. ग्राइंडिंग ऑफ द हार्ड मटेरियल्स रिक्वायर्स. ग्राइंडिंग ऑफ हार्ड मटेरियल, अगर हार्ड मटेरियल है तो डेफिनेटली क्या रिक्वायर्ड होगा बेटा? सॉफ्ट ग्रेड का रिक्वायर्ड होगा. एंड ग्रेड कैसी होनी चाहिए? फाइन ग्रेड. वेरी गुड कृष्णा मूर्ति, वेरी गुड. फाइन ग्रेड एंड सॉफ्ट ग्रेड्स, बिकॉज अगर देयर इज अ हार्ड मटेरियल यू आर नॉट अलाउड to grind it with what my dear hard grades, right? Because hard grades होंगे so definitely
रिमूवल नहीं होगा, इट विल नॉट जस्टिफाई इट्स कॉस्ट, राइट? ओके, वेरी गुड निंजा भाई, दैट्स वेरी गुड. प्रभास, तारिका, निंजा भाई, कृष्णा, everybody is correct. What about Neelam? So here I go for next one. Crater wear occurs mainly on the what media? Crater wear कहाँ होता है? Crater wear कहाँ होता है? मैंने पहले बताया था that today's question will based on what media? Basic concepts and definitions. Right? Very good. Soft material is correct. Correct. Got it. Face of the cutting tool at short distance from the cutting edge only. Correct. Right now? Yes or no, बच्चा पार्टी? Very good, my dear. Very good. Match plate pattern is used in. Match plate pattern कहाँ use होता है बेटा? Green sand molding में, bench modeling में, pig modeling में और machine modeling में. My dear, please tell me. Very good. Yes, guys, be fast. Give me the answer for this one. Hi, you're most welcome. निर्दोष चौधरी. चौधरी साहब नमस्कार. स्वागत है आपका. हाँ जी बेटा, machine molding होगा आंसर. Very good सारिका. It is none other than what, my dear? Machine molding will be the correct option for the match plate pattern we are utilizing. हम किस में utilize करते हैं बेटा? We are utilizing it on the machine molding, right? Okay, very good. Praful Gamit, notes 4 beta, 4 Praful. Here I go for next one. Nishant, Niharika ji, most welcome. The mold for casting ferrous material. Remember, ferrous material. ठीक है? In a continuous casting process is made up of किससे बना होता है? जब फेरस की कर रहे होते हैं कास्टिंग. बच्चा पार्टी, माउल्ड जो होता है जब हम फेरस को कास्ट कर रहे होंगे तो जो माउल्ड है फॉर कंटिन्यूअस कास्टिंग किससे बना होगा वो आपको बताना है. सो माय डियर, इट इज नन अदर देन व्हाट? किससे बना होता है बेटा? बेटा किससे बना होता है? ग्रेफाइट से. किससे बनता है वो? ग्रेफाइट से बनता है. किससे बनता है? कंटिन्यूअस कास्टिंग के लिए हमें कंटिन्यूअस कास्टिंग बोला तो बेटा ग्रेफाइट यूज होगा. क्या यूज होगा? ग्रेफाइट. बट यहाँ पे ऑप्शन क्या है? कोई नहीं है. तो मतलब क्या हो जाएगा? यह ही नहीं यहाँ पे, तो आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस. क्या हो जाएगा बेटा? नन ऑफ दिस. इंग्लिश. ओके, इंग्लिश, डोंट वरी. ग्रेफाइट इज करेक्ट. वेरी गुड. हियर आई गो फॉर नेक्स्ट वन. ऑर्नामेंट्स आर कास्ट बाई. ऑर्नामेंट्स मतलब ज्वेलरीज किससे बनती है बेटा? ऑर्नामेंट्स. हाँ जी बच्चा, यू नो दैट. गाइस बी फास्ट. स्लश किससे बनती है? स्लश कास्टिंग से. किससे बनती है बेटा? स्लश कास्टिंग से. वेरी गुड. स्लश. वेरी गुड. कैन यू टेल मी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग किसके लिए यूटिलाइज होती है? सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग. सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग कहाँ गई? सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग वी आर यूटिलाइज टू व्हाट माय डियर? टू मेक पाइप्स. याद आ रहा है? धुआं सा पाइप्स. कैन यू टेल मी डाई कास्टिंग कौन सी होती है? एक हॉट चेम्बर डाई कास्टिंग होती है, हॉट चेम्बर. एक होती है कोल्ड चेम्बर. सो जो हॉट चेम्बर होती है, ये हॉट चेम्बर हम किसके लिए यूटिलाइज करते हैं? हाँ जी बच्चा पार्टी. जिंक, टिन एंड लीड अलॉयज. क्या बेटा? जिंक, टिन एंड पीवी और यू कैन से लीड अलॉयज के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या? हॉट चेम्बर, राइट? वी आर यूटिलाइजिंग हॉट चेम्बर. ओके, एंड हॉट चेम्बर डाई कास्टिंग हैविंग मेल्टिंग पॉइंट. मतलब ये उन्हीं के लिए यूज करेंगे और जो भी और मटेरियल है जिनका मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर जो है 390 के बिलो रहता है. बिलो, जिनका मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर कितना होगा बेटा? 390 डिग्री से कम होगा, उनके लिए इसको यूटिलाइज करेंगे. ओके, आई होप यू गॉट इट. सो हियर आई गो. बाकी तो सब पता ही है आपको. द बेस्ट ऑल राउंड कूलेंट फॉर कार्बाइड टूल्स इज. कार्बाइड के लिए सबसे बेस्ट वन. Listen to me very carefully. What I'm saying. Chandradeep Prasad, most welcome, dear. What I mean to say, the best all-round coolant for carbide tools will be what, my dear? Carbide tools के लिए. Carbide. हाँ जी बच्चा. It is none other than what, my dear? Very good. Answer आ रहे हैं. Very good. हाँ जी बच्चा पार्टी. Please tell me. Very good. It's number 1. Soluble oil in a plant. Soluble oil in a plant is going to be a correct option. Soluble oil in a plant is going to be a correct option, right? Okay, here I go for next one. When the oil file is push and pull across the work, it is called. कोई भी फाइल होती है उसको पुश करते हैं और पुल करते हैं. That is none other than what, my dear? उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? That you have to tell. Yes, my dear, it is none other than what?
ड्रॉ फाइलिंग क्या होती है बेटा? ड्रॉ फाइलिंग, इट इज ड्रॉ फाइलिंग, इट्स ड्रॉ फाइलिंग बेटा, नो इट्स नॉट पेरिसिंग। ट्रांसफर मशीन किसको बोलते हैं? ट्रांसफर मशीन क्या किसको बोलते हैं? इट इज नथिंग बट व्हाट माय डियर, ऑटोमेटिक मशीन होती है जो कि ट्रांसफर करती है किसको? वर्क पीस को एंड फिक्सचर फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर। एंड जो सबसे बड़ी चीज क्या है कि सेम टाइम पे एंड सेवरल ऑपरेशंस आर परफॉर्मिंग, सेम टाइम पे उस पे सेवरल ऑपरेशंस मतलब मल्टीपल ऑपरेशंस किए जा सकते हैं, राइट? सो इट इज नन अदर देन नंबर 2। नंबर 2, वेरी गुड, पुश पुल, पुश पुल्स, नंबर 2। हाँ जी बच्चा पार्टी, यस और नो? Yes or no? Very good. No, Prabhas, it's not 1, it's 2. It's 2. I repeat, it's 2. Okay, here I go for next one. Chale, if you have anybody doubts, please let me know, my dear. The device mounted on lathe machine, which can be swivel to any angle, ठीक है, in the horizontal plane to facilitate the taper turning and thread cutting operation is known as, उसको पूरा स्वेल कर देते हैं। बताओ बच्चा पार्टी, कौन सा है? कौन सा? बेसिक सा है, अगर लेथ पढ़ा है तो आपको पता है, एंड दैट वी नो दैट माय डियर व्हाट क्या होगा बेटा? बच्चा पार्टी प्लीज टेल मी। कंपाउंड रेस्ट, करेक्ट सिमरनजीत, इट्स कंपाउंड रेस्ट। ऑपरेशन इन विच फ्लैट सरफेसेस आर प्रोड्यूस्ड बाय द मिलिंग कटर्स, देखो ध्यान से, फ्लैट सरफेस को मिलिंग कटर्स के थ्रू फॉर्म करते हैं, and which are mounted on the axis perpendicular to the milling surface is referred to as what, my dear? Slab milling, slot milling, face milling और form milling। सबको पता है बेटा क्या होगा? ये होगा face, क्योंकि आपने लगाया पूरा face को करा रहे हैं, राइट? सो इट शुड बी what, my dear? Face milling, face milling। Very good, Ankit, Praful। No, it's not 4, my dear, it's not 4, it's 3। I repeat, face milling, face milling, face milling। Sandeep, Sandeep, here I go for next one. Praful, very good. Sarika, very good. Which of the following operations is typically not performed using drilling machine? इसमें से कौन सा ड्रिलिंग मशीन के थ्रू ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होता है? बच्चा पार्टी बताओ जल्दी से, इसमें भी आधी ज्यादा जनता जाएगी। Half of the people will not able to answer this question, my dear. Please tell me. Please listen. De Villiers, yes. Hello, sir, from E branch. Thanks to Testbook, sir. 3-year SSC JE pre, please. Oh, very good. You can just reach out me on this. बिल्कुल, AB De Villiers, you are congratulations, my dear. बधाई हो आपको. Definitely will try our best so that we can provide mains as well. You don't worry. Okay, and you can just put your message on this. Okay, De Villiers, you can put your message on this. Okay, so bacha party, what should be the answer for here? Knurling is correct option. What, my dear? Knurling is going to be a correct option for here. What is the type of milling which produce irregular profiles using suitable cutters? I repeat once again. What is the type of milling which produces irregular profiles using suitable cutters? पता है बच्चा? Slab, slot, cut or form milling? Which one, my dear? Which one? These are nothing but the basic definition you should know. That is operation, my dear. It is none other than what? Very good, Arjun, very good. Form milling. Ninja bhai, how it could be one? Ninja bhai, how it could be one? I repeat, how it could be one? Sandeep, very good. Praful, everybody. Here I go for next one. When turning mild steel, if area of cross section is what, my dear? Cross section of the cut remain constant. If area of the cross section of cut remain constant, the cutting force will be minimum if depth of cut is क्या होनी चाहिए बेटा? You should know the relationship, then and only you are able to answer, my dear. Yes, please tell me. अगर वो फीट पर रिवॉल्यूशंस के इक्वल हो बेटा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू फीट पर रिवॉल्यूशंस। ओके, गॉड ब्लेस यू डियर, गॉड ब्लेस यू De Villiers. ओके, approximately equal to feet per revolution, my dear. Okay, here I go for next one. In case of taper for finish machining, the practice is to use
In case of paper for finish machining, the practice is to use what, my dear? Is to use what? Prabhas, Gamit, everybody, please tell me. कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? बच्चा पार्टी, बी फास्ट. In case of paper finish machining, the practice is to use what, my dear? Minimum feeds at high speed. What, my dear? Minimum feeds at high speed will be the correct option. Very good. Minimum feed. Arjun, Sam, Prabhas, Krishna, Niharika, Sandeep, Simranjeet, Ankit. Very good. A half nut is what, my dear? It is quite informative. What is mean by half nut? A half nut is what, my dear? Can you tell me? Mechanism that locks what? That locks what, my dear? That locks the lathe carriage to the what? To the what, my dear? Lead screw for thread cutting. Thread cutting जब हम कर रहे होते हैं, so at that time we are utilizing this to lock what, my dear? Carriage with what? Lead screw, right? Very good. NSCL examination, okay. It is what, my dear? It is what? Half nut. That is not. That is used to lock what? A lathe carriage with what, my dear? Lead screw while cutting threads. In a drill operation, torque is more than axial force. Torque is less than axial force. Torque is half of the axial force. Torque is equal to the axial force. My dear, which statement is going to be correct? I already told you that SSC JE will ask informative questions or basic questions, right? So, my dear, I want to tell you, क्या होता है इसमें? Torque क्या होता है बेटा? Torque is nothing but what? Half of axial force. That is number 3. Number three. Torque less than from no. Yes, torque is less than, obviously, no doubt, Arjun. But it should be na half. 0.5 होता है उसका. अमोल चौगुले, मोस्ट वेलकम, स्वागत है तुमचा अमोल. चला, while using high speed, इसके बारे में हम रिजल्ट जो आए हैं एसएससी जेई के उसके बारे में भी बात करेंगे, बट एट द एंड ऑफ सेशन यू डोंट वरी. ओके, बात करेंगे. While using high speed steel tools on a lathe, the speed of chuck will be lowest while machining. I repeat once again, listen to me, that while using high speed steel tools on a lathe, the speed of chuck will be lowest while machining what? Aluminium, brass, cast iron, copper. My dear, किसमें सबसे ज्यादा कम होती है? तो किसमें कम होगी बेटा? किसमें वो कम होगी? Cast iron, because cast iron is what, my dear? Brittle material, and it is failed due to high speed chuck, right? Cast iron, because cast iron brittle material, अगर ज्यादा speed होगी तो fail, right? So that's why I said number 3. So sorry. Okay, here I go for next one. My dear, देखो, the velocity of a tool along the tool face known as, क्या पूछ रहा है? पूछो, velocity of a tool along tool face, जो tool face होगी तो उसके along जो velocity of tool होगा, उस velocity को क्या बोलेंगे बेटा? क्या बोलेंगे बेटा? जल्दी बता दो. अरे भैया क्या बोलेंगे? VC नहीं बोलेंगे. VC chip velocity, chip. किसको? No, it's not 3. Cutting velocity नहीं होगा वो. Cutting velocity नहीं होगा. Cutting velocity which tool moves related to the workpiece. Cutting velocity वो होती है जिसके साथ में क्या होता है? Tool move होता है related to what? Workpiece. उसको बोलते हैं बेटा. ठीक है? Chip velocity. Very good. Here I go for next one. Which one of the following primary purpose to do the fluids on a twist drill serve? I repeat once again. Listen to the question very carefully. ये क्वेश्चन सिर्फ ऐसे है कि बस आपको रिवाइज कराए जा रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है इसमें. ठीक है ना? Which one of the following primary purpose do the fluids on twist drill serve? My dear, बताएं जल्दी से. They curl the chip for easy removal of chips. They provide additional cooling. They give better aerodynamic design for material cutting. They reduce friction on the cutting edge. My dear, इसमें से कौन सा पर्पस सही है? So obviously बात है, ट्विस्ट ड्रिल जो दी जाती है वो इसलिए जाती है कि जो चिप कट गई है वो फ्लो होके बाहर आ जाए, राइट? सो इट इज व्हाट माय डियर? दे कर्ल द चिप फॉर द इजी रिमूवल ऑफ चिप्स, राइट? राइट, वेरी गुड. कृष्णा, अंकित, सारिका, संदीप, अर्जुन, निंजा भाई, अमोल, अर्जुन सही दे रहे हैं सब. सिमरनजीत, हियर आई गो फॉर नेक्स्ट वन. देखो ध्यान से.
फ्रिक्शन एट द टूल चिप इंटरफेस, जो टूल और चिप जहां पे ज्वाइंट हो रहा है, मतलब जहां पे वो कांटेक्ट में आ रहे होंगे, वहां का फ्रिक्शन हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? इट कैन बी रिड्यूस बाय व्हाट माय डियर? कैसे रिड्यूस कर सकते हैं बच्चा पढ़? कैसे कर सकते हैं? बाय इंक्रीजिंग स्पीड, बाय इंक्रीजिंग व्हाट माय डियर? स्पीड, स्पीड इंक्रीजिंग व्हाट? कटिंग स्पीड, increasing what my dear? Cutting speed. Yes, Praful, Ankit. No, it's not decreasing, it's very good Ninja bhai, very good Krishna, Amol, Arjun, it's not one. Sandeep, very good. Here I go for next one. For which machines a very large speed range is required? For which machine a very large speed range required? Very good. Very good, my dear. Please tell me. Guys, be fast, my dear. जल्दी बताएं. सबसे ज्यादा स्पीड किसका होता है इसमें से? ड्रिलिंग, शेपिंग, ग्राइंडिंग, प्लेनिंग, किसका होता है बेटा? किसका होता है? हाँ जी, कितना होता है? ग्राइंडिंग का. वेरी गुड. इट इज नन अदर देन व्हाट? ग्राइंडिंग. ग्राइंडिंग. वेरी गुड. हियर आई गो फॉर नेक्स्ट वन, माय डियर. पावर कंजम्पशन इन अ मेटल कटिंग इज मेनली ड्यू टू, किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? टेंजेंशियल फोर्स. दैट इज नन अदर देन व्हाट माय डियर? टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स. राइट ना? टेंजेंशियल. नहीं 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 अंकित जी, उससे ज्यादा होता है ग्राइंडिंग में. ठीक है अंकित जी, उससे ज्यादा होता है ग्राइंडिंग में. होता है, बट ग्राइंडिंग में उससे ज्यादा. ठीक है. If the value of rake angle is large, positive value, then material is not deformed. Material is forced back to itself. Material is deformed itself in the chip. Material is deformed more in the chip. My dear, which one is going to be correct? बताएं जल्दी से, कौन सा होगा ऑप्शन? बच्चा बच्ची जल्दी बताएं. क्या होगा? Material is deformed less in the chip. वेरी गुड. ओके, गॉट इट ना. वेरी गुड. अब टेंजेंशियल जो फोर्स बात कर रहा था लास्ट क्वेश्चन में, ये लास्ट क्वेश्चन में जो टेंजेंशियल फोर्स की बात की थी, कौन सा फोर्स है? एफसी है. मोर सर्कल में हम बनाते हैं ना एफसी, वो है ये. ठीक है. इट्स व्हाट माय डियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में ये यहाँ पे आंसर हमने क्या दिया अभी? मटेरियल इज डिफॉर्म लेस इन द चिप. मटेरियल इज गोइंग टू बी डिफॉर्म लेस इन द चिप. आई रिपीट. ओके ओके, हियर आई गो फॉर नेक्स्ट वन. अब देखो ध्यान से क्या पूछ रहा है. A specific cutting energy if F is what my dear? For specific cutting energy, if F is the power required for cutting, Z is what my dear? Metal removal rate. Then which of the following expression can be used to calculate energy per unit volume? That is U. U is equal to क्या होगा बेटा? बच्चा पार्टी बी फास्ट में. बी फास्ट, बी फास्ट. हाँ जी, क्या हो जाएगा? U. U is equal to क्या हो जाएगा बेटा? U is equal to हो जाएगा F by Z. And what should be the unit? Unit क्या आएगा इसका? जूल पर mm क्यूब. इसका यूनिट क्या होगा? जूल पर mm क्यूब. ओके, 1. U is equal to F by Z. Very good. Here I go for next one. Which of the following is performed with a cutting tool moving at a cutting speed V in the direction of primary motion? I repeat once again, listen to the question carefully. Which of the following is performed with a cutting tool moving at a cutting speed V in the direction of primary motion? My dear, बताएं जल्दी से, कौन सा परफॉर्म करते हैं बेटा? क्या होता है ये? कटिंग. इट्स वेरी सिंपल. 1/1000. वेरी गुड. इट शुड बी व्हाट माय डियर? कटिंग नहीं होगा. इट्स वेरी सिंपल नाउ. यस, it is what? Cutting operation beta. Cutting operation. Sanjay, most welcome dear. Sanjay, you're most welcome. Here I go for next one. Saugulesa, Amol, very good. During metal cutting process, temperature at job tool contact point is measured by. I repeat once again. During metal cutting process, temperature at job tool contact point is measured by watt meter, dynamometer, pyrometer, hydrometer. डायनामोमीटर तो बेटा फोर्स मेजर करती है, राइट? तो डायनामोमीटर तो बिल्कुल भी नहीं है, है ना?
सो बचता क्या है बेटा, वाट मीटर से पावर होती है, पायरोमीटर आपको पता है, पायरोमीटर से हम लोग मेजर करते हैं क्या बेटा, कुछ याद आ रहा है, सोलार में यूज किया था हमने पायरोमीटर, दैट इज टेम्परेचर, राइट। नंबर 3 विल बी द करेक्ट ऑप्शन, वेरी गुड, पायरोमीटर। नो, वैट मीटर कैसे करेंगे, वैट को सिर्फ इंडिकेट्स पावर। अर्जुन, प्रफुल्ल गमित, संजय, वेरी गुड डियर, निंजा भाई, अमोल, हाँ तो रेडिएशन टाइप में ही टेम्परेचर है वहां पे, पायरोमीटर डालिएगा आपको पता चलेगा कृष्णमूर्ति, यू कैन चेक इट आउट, it has been utilized solar, we have also studied this instrument in the solar renewable sources of energy, right now, RSE. The part in contact with the job for doing different operation, I repeat once again, the parts in contact with job for doing different operations of generation of a surface of products are known as what made products, tools, chips, workpiece. Guys, be fast. कौन सा होता है, these are what my dear, very good, these are tools, the parts in contact with the job for doing different operations, क्या होगा, tool होगा ना बच्चे पार्टी, प्रोडक्ट चिप कैसे हो सकता है, this tool, okay, here I go for next one. The main advantage, main alloying element in high speed steel HSS is nothing but what my dear, क्या मिलाते हैं HSS में, क्या मिलाते हैं बेटा, क्या मिलाते हैं बताओ जल्दी से, क्या मिलाते हैं बेटा, क्या मिलाते हैं, वैनेडियम, क्रोमियम, टंगस्टन, वैनेडियम, क्रोमियम एंड टंगस्टन, आई रिपीट वंस अगेन, ओके। सो अब मेरे को एक बात बताएंगे आप, सबसे ज्यादा क्या होता है, सबसे ज्यादा क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है बेटा क्या, टंगस्टन, 18% होता है टंगस्टन, ठीक है ना, 18% होता है, 18%, ओके, इट इज 18% टंगस्टन, ये सबसे ज्यादा होता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कटिंग टूल्स एंड आइडेंटिफाई द वन विच इज नॉट ट्रू, इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है ये आपको बताना है, which one is not true that we have to find out, right? So I repeat, nose radius in cutting tool reduces tool life and surface finish, no it does not, opposite है इसका, right, nose radius in cutting tool reduces tool life, no it increases the tool life, right now an increase in nose radius improves tool life, that we know my dear, right? So कहने का मतलब है बेटा कि पहला वाला ही क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन नंबर 1, okay, we got it, here I go for next one, number 1 is correct, Sarika, Ninja, Dilly Ganesh, Sam, Krishnamurthy, very good, Amol, very good, got it beta, here I go for next one, the lip angle of a single point cutting tool is what my dear, lip angle कितना होता है, lip angle मैंने बोला टोटल इंफॉर्मेटिव सेशन होगा ये, राइट, हाँ जी बच्चा, lip angle, हाँ जी बच्चा प्लीज टेल मी, हाँ जी बच्चा कितना होता है, 60 to 80, 60 to 80। अच्छा एक बात बताओ, जो लीप एंगल होता है, पहले तो इसके नाम बताओ, बाद में बताता हूं, इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको कटिंग एज एंगल ही बोलते हैं, कटिंग एज नहीं, सॉरी कटिंग एंगल, it is also known as cutting angle, it is also known as what my dear, knife angle, याद रहे, it is also known as what my dear, knife angle, and it is also known as what, wedge angle, remember it is also known as what, wedge angle, right? Now you tell me, it is an angle between what, it is angle between, it is what my dear, it is the angle between what, yes anybody, face and, हाँ जी बच्चा किसके बीच का एंगल है, फेस एंड फ्लैंक, that you have to keep in mind, face and flank, very good Krishna, very good dear, here I go for next one, which of the following among the given option is a single point cutting tool, इसमें से कौन सा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल,
single point cutting tool. Guys, please tell me which one of them following is what, my dear? Single point cutting tool. That you have to tell me. Yes, bacha party. Guys, be fast. Be fast. Very good. That is what, my dear? It is single point, right? And ये मिलिंग क्या होगा? मिलिंग होगा मल्टी. ये भी मल्टी, right? Yes or no? So option number 3 is going to be correct. Very good, Praful Sarika, Kaushal Patel, most welcome, dear. Kaushal Patel, you are most welcome. Amol, Arjun, Krishna, everybody correct. Niharika, that's very good, dear. Okay. अब ये तो कोई भी बता देगा, राइट ना? ये तो कोई भी बता देगा. अरे बता दोगे कि नहीं बता दोगे? आपसे क्या पूछ रहा है? शेयर एंगल पूछ रहा है. क्या होता है बेटा? tan phi. Tan phi is equal to क्या होता है? r cos of alpha 1 minus what बेटा? r sin alpha. r क्या है? चिप थिकनेस रेशियो. क्या होता है बेटा? ये t अपॉन tc, राइट? और अगर ऑर्थोगोनल टर्निंग दिया रहा, वहां पे t नहीं दिया रहा, तो क्या होता है? t किसके बराबर हो जाता है? f के बराबर, राइट? याद है? धुआं धुआं सा. ये सब ना बच्चा पढ़. yes, okay. Here I go for next one, my dear. Now I'll go for the next one. So see here. Yes, anybody have any queries? No queries. That's very good. So following type of chip is produced while machining ductile metals with extreme pressure in cutting zone and high local temperatures. I repeat once again. Listen to the question very carefully. Following type of chip is produced while machining ductile metals with extreme pressure in a cutting zone and high local temperature. My dear, please tell me which one is going to be a correct option. So it is nothing but what? Very good, very good. Chaugle, chaugle, very good. Bacha party, it is none other than what? It is none other than the what, my dear? It is none other than a continuous shape, but there is a formation of built-up edge. What, my dear? Built-up edge. Can you tell me the advantage of the built-up edge? I said advantage. क्या होगा एडवांटेज? कैन यू टेल मी व्हाट इज द एडवांटेज? कोई एडवांटेज है इसका? यस, देयर इज ऑफ कोर्स देयर इज अ एडवांटेज ऑफ इट. क्या एडवांटेज होगा बेटा? इट कैन व्हाट, माय डियर? इट कैन टूल लाइफ को क्या करता है? इंक्रीज डिक्रीज. हाँ, वेरी गुड. टूल लाइफ को इंक्रीज कर देता है. टूल लाइफ को इंक्रीज कर देता है. Abrasive used for grinding ceramic and tungsten carbide is what, my dear? I repeat once again that abrasive used for grinding ceramic and tungsten carbide is what, my dear? Please tell me. Bacha party क्या हो? None other than very costly. It is a very costly. That is what, my dear? Very good. No, it's not Buron. I say it's very costly. Ninja bhai. Very good, Niharika. No, Sanjay. Sanjay, this time you're wrong. Very good, Niharika. That is what? A diamond. What beta? Diamond. It's correct. Ninja bhai, very good. Diamond is correct option, right? Here I go first. Essential property of a tool material used for high-speed machining is. Essential property of a tool material used for high-speed machining is what? Red hardness and impact resistance, red hardness and water resistance, toughness and impact resistance, red hardness, wear resistance and toughness. Which one, my dear? 1, 2, 3, 4. Which one is going to be correct? Number 4. Very good. Very good. Property of tool material for high-speed machining. Correct. That is, it have red hardness, wear resistance and toughness. Very good. वेरी गुड. गॉट इट. बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग. बड़ा अच्छा लगता है जब आपको देखते हैं कि हाँ आप लोग ऐसे जा रहे हैं. ठीक है, बहुत सही जा रहे हैं, बहुत सही जा रहे हैं. ठीक. हियर आई गो. सेलेक्ट द स्टेटमेंट दैट इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टूल स्टील. हमें एक ऐसा स्टेटमेंट बताना है इसमें से जो कि किसका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? टूल स्टील का. हाँ जी बच्चा, टूल स्टील का कैरेक्टरिस्टिक्स ना हो वो बताना है. सो इट इज अ स्टील विथ 0.3 to 0.6 कार्बन बाय वेट. नो, इट यही तो बेटा. ये कितना होता है? इसका क्वांटिटी कितना होता है? 0.5 to 1.5
कितना होता है बेटा 0.5 to 1.5%, राइट? हाँ या ना? ऑफ कोर्स क्या होता है, इतना ही होता है, राइट? राइट ना? वेरी गुड, वेरी गुड इवनिंग शुभम उपाध्याय. कृष्णमूर्ति above 0.9. It is what, my dear? 0.5 to 1.5%. So it should be what, my dear? It is not a characteristic of it, right? Deepan Parida, you are most welcome, dear. Here I go for next one. The relationship between shear angle phi, friction angle beta, cutting rate angle alpha, the machining constant C for work material is what, my dear? For work material is what? That you have to tell me. Haji bacha. Haji, merchant theory, if you remember. Merchant theory, if you remember, beta. It is none other than what, my dear? It is none other than twice phi plus beta minus alpha is equal to C, right? And now you tell me one thing. This equation is utilized for what, my dear? For minimum energy consumption. ये ध्यान रखना है. It is nothing but what? Merchant's theory. If you remember, we have already studied this, right now. CONS means consumption. I have written in short. Okay. Okay, here I go for next one. Guys, do hit like, share, and subscribe. Which of the following statement is not true for diamond? Diamond के लिए सही नहीं है वो बता. Which one of the statement is not going to be correct for this one? Bacha party, yes, please tell me. Bacha party, please tell me. हाँ जी, वेरी गुड, सबने मार दिया. फोर्थ, बिकॉज ये हाई की जगह पे क्या होना चाहिए? लो. ये हाई की जगह पे क्या होना चाहिए? लो. ओके, आई वांट टू आस्क वन थिंग. You know that we have 2-3 equations in that merchant theory right now. So can you tell me that Ernest and merchant theory जो था, that is according to the Ernest and merchant theory, merchant theory के बेस पे, guys, can you tell me the equation for this? That is what? हाँ जी बच्चा, that is what, my dear? It is nothing but twice phi plus beta minus alpha. That is what, my dear? Pi by 2. That is nothing but what? 90 degree. ये याद रखना, right? And एक ली एंड शेफर थियरी था, उसमें क्या था बेटा? उसमें था phi plus beta minus alpha, and that is equal to what? Pi by 4. That is what? Pi by 4 means what, my dear? 45 degree. एक था स्टेबलर का इक्वेशन, इफ यू रिमेंबर. स्टेबलर थियरी थी एक, राइट? And Stabler theory में क्या बोला गया था? Yes, बच्चा पार्टी, please tell me. What is that? That is phi plus beta minus alpha by 2. Phi plus beta minus alpha by 2 is equal to what? हाँ जी बच्चा पार्टी, क्या था वो? It is again 45. It is what? Stabler. It is Lee and Shepler. It is Ernest and Merchant theory. That you have to keep in mind as well. Okay. हाँ, थर्मल कंडक्टिविटी क्या बोल रहे हो आप? नो, वहां पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पूछा है. देखो, इलेक्ट्रिकल पूछा है बेटा, इलेक्ट्रिकल पूछा है. इलेक्ट्रिकल क्या पूछ रहा है? नॉट ट्रू. जो सत्य नहीं है वो बताना है बेटा. थर्मल कंडक्टिविटी हाई होता है, थर्मल कंडक्टिविटी हाई होता है. अरे डायमंड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ अ हीट. That you have studied. Diamond is a good conductor of a heat. That means what? It have a high thermal conductivity. ये भी बताना पड़ेगा. सिमरनजीत, here I go for next one. Which of the following should be more to reduce wear of the tool? Which of the following should be more to reduce the wear of the tool, my dear? Weight, density, hardness. Weight, density, hardness. अच्छा, एक बात बताओ, डायमंड क्या है बेटा? डायमंड इज मेटालिक और नॉन मेटालिक? कैन यू टेल मी? मेटालिक और नॉन मेटालिक? कैन यू टेल मी? डायमंड इज मेटालिक और नॉन मेटालिक? वेरी गुड, नॉन मेटल. ये नॉन मेटल है, ध्यान रखना. हाँ बच्चे पार्टी, इसका आंसर दें.
What should be the answer for this? Yes, which of the following should be more to reduce the wear of the tool? हाँ जी बच्चा, डेंसिटी और हार्डनेस ज्यादा होना चाहिए। डेंसिटी और हार्डनेस, ये बी एंड सी बोल रहा है यहाँ पे, 2 and 3, ये बी एंड सी हो गया। दैट इज व्हाट डेंसिटी एंड हार्डनेस। डेंसिटी एंड हार्डनेस, ओके। इन अ orthogonal cutting experiment with a tool of rake angle alpha this much, shear angle this much, friction angle beta बताना है। What should be the friction angle beta? So guys, I already told you that, right? अभी तो आपको बताया था मैंने, twice phi plus beta minus alpha is equal to c, right? But merchant theory के through हम form कर सकते हैं। Merchant theory we have already utilized, and that is nothing but what, my dear? Twice phi plus beta minus alpha, and that is equal to pi by 2, that is 90 degree. Put the value, get the answer. Phi दिया हुआ है आपको, अल्फा दिया, you can get the beta, and beta कितना आ रहा है बेटा? Beta कितना आएगा? 77.4. Anybody have any doubt? Please tell me. Sorry, it's degree only, not degree centigrade. It's not temperature. हाँ जी बच्चा, please tell me. Sir, okay, you got it. What is the answer? 77.4. So that means answer will be what? None of these. None of these. Very good, Amol. On a tool surface, crater wear occurs mainly due to. Crater wear क्यों होता है? What is the reason of that? Crater wear होने का reason क्या है? हाँ, we have already studied this. This is nothing but what, my dear? Diffusion. Diffusion. बेटा diffusion है, diffusion है, diffusion. I repeat, it's a diffusion. It is nothing but what? Diffusion. I repeat, it's a diffusion. Krishnamurti, no, it's not aberration. Okay, it's not aberration. I repeat. Here I go for next one. Okay. अच्छा ये बताएं, क्रैटर वियर जो होता है वो कौन से सरफेस पे होता है? ये कौन सी फेस पे होता है? एंड जो एक और कौन सा होता है? फ्लैंक वियर होता है। क्रैटर वियर हो गया, एक होता है फ्लैंक वियर। ये कौन सी फेस पे होता है? ये कौन सी फेस पे? तो बच्चा पार्टी, ये किस पे होता है? ये रेक फेस पे होता है। एंड ये एज नेम इंडिकेट्स व्हाट, माय डियर? फ्लैंक फेस पे होता है। ओके, ओके ना? आई होप यू गॉट इट। आई होप यू गॉट इट। So it is none other than diffusion. Okay, face side पे, very good. Here I go for next one. अब face side पे आपने किसके लिए बोला था? ये मैं ध्यान नहीं दे पाया। In a single point turning operation with cemented carbide and steel combination having a Taylor exponent that is 0.25, the cutting speed is half. Okay, then the tool life becomes. तो tool life क्या होगी बेटा? टेलर सीरीज पे बेस क्वेश्चन है। टेलर सीरीज पे बेस क्वेश्चन है, राइट? Yes or no? Yes or no, my dear? Yes. That you know that equation Vtn is equal to constant. You know that V2 is equal to what, my dear? V1 by 2 दिया हुआ है, and हमें दिया है 0.25, right now? So can I say like this? That is what, my dear? I can say T2 by T1. I am directly writing what, my dear? V1 by V2 raised to power what? 1 by n. अरे हाँ या ना बच्चा पार्टी, बोलो रे बाबा। Yes or no? So my dear, V1 by V2 is nothing but what? V1 by V2 is nothing but 2 from this equation. V1 by V2 is going to be 2. So I'm going to write this. That is what, my dear? T2 by T1 is equal to what? 2 raised to power what, my dear? 1 by n. That is what? 1 upon 0.25. 0.25. So can I say 1 upon 0.25 is nothing but, can I write like this? 1 by 4. So can I say 2 raised to power 4? Of course I can say. That means T2 by T1 is going to be what, my dear? 16. So I can say T2 is nothing but 16 times of T1. Right, bacha party? Yes or no? Yes. So it is going to be number 4. It is going to be number 4. Okay. Anybody have any doubts? No doubts. Very good. Here I go for next one. चलते हैं आगे, ठीक है? Here I go for next one.
Which of the following values of index n is associated with carbide tools when Taylor tool-like equation VT raised to power n is equal to constant is applied? But we have to choose for what, my dear? Carbide tools, right? We have to choose for carbide tools, right now. So HFS के लिए कितना होता है? हाई स्पीड स्टील होता है, उसके लिए कितना होता है बेटा? 0.082 कितना? हाँ जी बच्चा, 0.2 तक होता है n का वैल्यू. आई एम टॉकिंग अबाउट द वैल्यू ऑफ n. After that, we have cemented carbide. Cemented carbide. इसके लिए कितना होता है बेटा? That is none other than 0.2 to 0.5. 0.2 to 0.5. And after that, we have coated carbide. We have coated carbide. इसके लिए भी सेम होता है बेटा. 0.2 to 0.5. And after that we have ceramic. Ceramic के लिए होता है 0.5 to 0.7. Ceramic के लिए क्या होता है बेटा? 0.5 to 0.7. Yes, anybody have any doubts? Okay. Can you tell me one more thing that I want to add over here? एक चीज और ऐड कर दूं यहाँ पे. बच्चा पार्टी ये बताओ कि यहाँ पे स्पीड कितना होता है, कटिंग स्पीड कितना होता है? इसके लिए कितना होता है? 30. इसके लिए कितना होता है? 150. और इसके लिए क्या होता है बेटा? 350. और इसके लिए क्या होता है? 600. लेकिन सर यूनिट क्या है इनका? मीटर पर मिनट. ध्यान रहे, इन सब का यूनिट क्या है बेटा? मीटर पर मिनट. तो स्पीड पूछ लेना कभी, कटिंग स्पीड की. कटिंग स्पीड क्या होगा? किस कटिंग स्पीड के लिए बेटर है ये टूल्स? सो योर ऑप्शन शुड बी कि 30 मीटर पर मिनट रहा स्पीड, तो भैया HSS. सीमेंटेड कार्बाइड 150 मीटर पर मिनट, कोटेड कार्बाइड 350 मीटर पर मिनट, एंड सिरामिक है तो बेटा 600 मीटर पर मिनट. ओके, ये ध्यान रहेगा, ये ध्यान रखना है हमेशा. Here I go for next one. Running wheel of 200 mm dia is having peripheral speed of 30 meter per second. What is the speed of grinding wheel in a motion per minute? Grinding wheel motion per minute will be what, my dear? It's very easy again. Cutting speed क्या हो जाएगा बेटा? pi dm by 60. अरे क्या होगा? V is equal to pi dm by 60, right? Yes or no, my dear? Of course it should be. So you can get V is equal to what, my dear? Pi dm by 60. So here it is given 30. Here pi dia 200. So it is in meter per second, right? So 200 into 10 raised to power minus 3 into n by 60. My dear, you can get n from here, and आपका n आ जाएगा. That will be come around to be, my dear, 2865 revolution per minute. Very good, Simranjeet. Very good. Pi dm by 60. Very good, dear. Now we'll go for the next one. See, a workpiece is turned on a lathe machine at 100 meter per minute. क्या speed है? 100 meter per minute. Okay. Cutting speed. Okay. 0.4 mm revolution and 1.5 mm depth of cut. What is the rate of metal removal? आपसे पूछ रहा है क्या बेटा? MRR, metal removal rate, right? Metal removal rate. So my dear, what should be the formula? So it is nothing but depth multiplied by feet multiplied by velocity. So bachcha party, it is going to be how much? 1.5 into 0.4. Depth is what, my dear? 1.5 into 0.4 into what? 100, right? Multiplied by what, my dear? 1000 mm mechanical. So it is going to be what, my dear? 60,000. It is going to be 60,000 what? mm cube per minute. क्योंकि यहाँ पे mm में पूछा था, right ना? Velocity is in meter, right? Very good. Second is correct. Very good, dear. Guys, do hit like, share and subscribe. ये करते रहें. Which of the following is not a function of fixtures? इसमें से कौन सा फंक्शन नहीं है वो बताना है. जो है उसको चूज नहीं करना है, जो नहीं है वो बताना है. Clamping the workpiece, holding the workpiece, guiding the tool, locating the workpiece. My dear, which one is going to be correct? ये टूल को गाइड बिल्कुल नहीं करता. It does not guide the tool.
Okay, it does not guide the tool. Very good. Guiding the tool is not going to be answer. Very good. Simranjeet, Sam, Arjun, Amol, Sanjay. It's not one. It's three. Dilly Ganesh. Very good. Sarika, Neelam. What about you? Which is Niharika? Which is the most widely used metal for casting? इसमें से कौन सा मोस्टली वाइडली एकदम यूज होता है कास्टिंग के लिए? सबका आंसर होगा इसका, सबके पास आंसर होना चाहिए इसका. हाँ जी बच्चा पार्टी, वेरी गुड. सब आंसर दे रहे हैं. दैट्स वेरी गुड थिंग. दैट इज नन अदर देन हमारा प्यारा, सबका प्यारा. कौन सा प्यारा? सीआई इंजन नहीं, कास्ट आयरन. क्या बेटा? कास्ट आयरन. वेरी गुड निहार. नो, इट्स नॉट मैग्नीशियम एलॉय. इट निहारेगा, इट शुड बी फोर्थ वन, कास्ट आयरन. करेक्ट. बहुत ज्यादा यूज होता है फॉर स्टील कास्टिंग. द फॉलोइंग टाइप ऑफ सैंड इज बेटर. इसमें से स्टील कास्टिंग के लिए सबसे बेटर कौन सी होती है? स्टील कास्टिंग के लिए बच्चा पार्टी प्लीज टेल मी. हाँ जी बच्चा बताएं जल्दी से. बच्चा पार्टी प्लीज बी फास्ट. गाइस बी फास्ट माय डियर, बी फास्ट. सो मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा सुटेबल होगा वो कोर्सर ग्रेन होगा. क्यों होगा? क्योंकि इसका जो परमेबिलिटी होती है काफी हाई होती है. परमेबिलिटी मतलब जो गैसेस होगी वो बाहर निकल जाएगी, राइट ना. सो दैट्स व्हाई वी यूटिलाइज व्हाट माय डियर, कोर्सर ग्रेन. जो सैंड होती है दैट इज क्वाइट बेटर बिकॉज उसका परमेबिलिटी हाई होता है. ओके हाँ, नेम में ही है. For the production of the quality part, the following casting method is normally employed. इसमें से कौन सा? For the production of a quality part, the following casting method is normally employed. इसमें से कौन सी employ होती है for quality part? Centrifugal, continuous, green and sand, pressure and die casting. बच्चा पार्टी प्लीज बताएं. तो मैं बता दूं आपको कौन सी होती है बेटा. कोई कुछ बोल रहा है? क्या बोल रहा है? परमेबिलिटी रो रखना चाहिए था. अच्छा, गैसेस अंदर रह जाए तो कास्टिंग डिफेक्टिव निकल जाए. सैम ऑप्टिमम में वी बिलीव, नॉट हायर, नॉट टू मच, नॉट टू लो. इट शुड बी ऑप्टिमम. सो दैट फॉर दैट द कोर्सर ग्रेन विल बी बेटर. Oh, Simranjit, what it says, I repeat once again. They said quality part, my dear. Production of a quality part that you can manufacture by the centrifugal casting. No. It should be what, my dear? Pressure and die casting, I repeat. It should be what, my dear? Pressure and die casting. It should be what, my dear? Pressure and die casting. It is pressure and die casting. Graphite molds are generally used for continuous casting methods because graphite molds are generally used for continuous casting methods because the metals wet the mold slightly. Only a small film of lubricating oil is required. They are self-lubricating. They are comparatively cheaper. My dear, बताएं. तो they are self-lubricating is the option. बच्चे पार्टी. It is what? They are self-lubricating. Informative questions. Once again, self-lubricating. Very good, Krishna, Niharika, Sarika, Praful. What about other people? Those who are watching, guys, don't forget to answer. Okay. Now, in a blast furnace, my dear, in a blast furnace, which of the following fuel we are using? In a blast furnace, my dear, please tell me. हाँ जी बच्चा, कौन सा यूज करते हैं? वेरी गुड, आ गया आंसर. कोक. कोक. व्हाट माय डियर? कोक. इट इज नन अदर देन व्हाट माय डियर? कोक. कोको कोला नहीं है, ये अलग है कोक. The grid size of the abrasives used in grinding wheel is usually specified by the grid size of abrasives used in the grinding wheel is usually specified by hardness number. बच्चा पार्टी, hardness number? No.
साइज ऑफ व्हील बिल्कुल नहीं, मेश नंबर होता है, mesh number, right? It is none other than what, my dear? Mesh number, I repeat, mesh number. Okay, here I go for next one. Okay, here I go. चलें, आगे चलें. Can I go for next one? Here I go for next one. Mesh number, correct. For grinding operations in which heat generation must be kept minimum. For grinding operation in which heat generation must be kept minimum, the following bond of wheel must be used. बताएं बच्चा पार्टी कौन सा बॉन्ड यूज करते हैं? दो होते हैं, एक विट्रीफाइड और एक सिलिकेट्स. सो जब हमें क्या करना पड़ता है, जब हमको मिनिमम रखना होता है हीट जनरेशन, तो हम कौन सा बॉन्ड यूज करते हैं बेटा? बोलो, अरे बोलो रे बाबा. वेरी गुड, सिलिकेट्स. सिलिकेट इज द करेक्ट ऑप्शन. वेरी गुड डियर. सिलिकेट बिल्कुल सही ऑप्शन है. कृष्णा मूर्ति वेरी गुड. प्रफुल सैम इट्स नॉट 3. Simranjit, silicate, very good. Bala Krishna is most welcome. Bala Krishna. Krishna, silicate, very good. It is what, my dear? Silicates. I repeat, silicates. Right? Okay. Here I go for next one. The main advantage of shell molding is that. What is the main advantage of it? Shell molding का main advantage क्या है? That you have to tell me. Metallic pattern is used. हाँ जी बच्चा, कौन सा इसमें से? Guys, be fast. Metallic pattern is used? No. The modulus are stronger? No. Thin sections can be easily obtained. Correct. जो thin sections है उनको हम बहुत easily बना सकते हैं. किससे? Shell molding से. That we have already studied. Right ना? अरे बोलो रे बाबा. सुभाष कुमार, very good. Simranjit, thin sections, very good. Praful, Niharika, Krishna, Sanjay, very good dear. सही जा रहे हो, सब सही जा रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो. Here I go for next one. In arc welding, arc is created between electrode and work by. In arc welding, arc is created between electrode and work by what, my dear? Flow of current, voltage, material characteristics, contact resistance. Which one, my dear? बताएं बच्चा पढ़े कौन सा करेक्ट होगा इसमें से? Main advantage, sorry, in arc welding, sorry, main advantage तो हो चुका. In arc welding, arc is created between electrode and work by what, my dear? Contact resistance. हाँ जी बच्चा, किसके जैसा तो होता है? It is contact resistance बेटा. क्या फ्लो ऑफ करंट भी है? नॉट गेटिंग. किसी बुक पे फ्लो ऑफ करंट से नहीं होता है, दैट इज मिस बेटा. इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस. आई रिपीट, नो. मेटल टू मेटल जॉइंट्स इज यूज्ड फॉर एप्लीकेशन सब्जेक्ट टू. आई रिपीट वंस अगेन, that is metal to metal joint is used for application that has been subjected to what? Very high pressure, very high temperature, very high pressure temperature, severe vibration. My dear बताएं, जहां पे metal to metal contact बनाते हैं हम, कौन सी इसमें बनाते हैं बेटा? कहां बनाते हैं? जहां पे, very good. What, my dear? It should be very high pressure. मैंने पहले ही बताया कि फ्लो ऑफ बहुत सारी जो बुक्स हैं, even I told you that you can follow RK Jam, but you don't follow what? You have to follow the question from it. What? You have to follow only questions from RK Jain. You are not allowed. Even you can use RS Kurmi as well. But my suggestion is you have to only follow the questions from these two books. Don't follow their answers because there is too many mistakes in that books while solving the questions. Question को solve करते time बहुत सारी mistakes उसमें हुई हैं, तो आंसर को फॉलो नहीं करना है. डोंट फॉलो आंसर. आई रिपीट वंस अगेन, डोंट फॉलो द आंसर्स ऑफ द बुक्स. जस्ट यूटिलाइज योर कांसेप्ट्स एंड फंडामेंटल्स व्हाटएवर यू हैव लर्न इन योर क्लासरूम्स. ओके, डोंट फॉलो आंसर्स. आई रिपीट, इनके आंसर्स फॉलो बिल्कुल नहीं करने हैं. अगर करोगे, मेहनत भी करोगे, नहीं निकलेगा एग्जाम. हम बता रहे हैं पहले, ठीक है ना बच्चा पार्टी? सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? अरे हाँ बोल दो. हाँ, वही बोल रहे हैं हम स्टार्टिंग से बोल रहे हैं कि बेटा डोंट फॉलो आंसर्स, जस्ट फॉलो द क्वेश्चन, बिकॉज क्वेश्चन इज नो, बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ.
डिजाइन ऑफ जिग्स एंड फिक्सचर्स नीड केयरफुल अटेंशन टू। कहां पे बहुत ज्यादा केयरफुल अटेंशन देना पड़ता है जिग्स एंड फिक्सचर्स के केस में बेटा? Idle time and direction, correct. Design for safety, yes, it's also correct. Swarf clearance, it is also correct. All of the above correct. That means all of the above are correct, my dear. All of the above are correct. Okay. All of the above are correct. What, my dear? All of the above correct. Okay. Now, can you tell me what is swarf? Can you tell me the meaning of this? सबने हाँ में हाँ तो मिला दी। व्हाट इज सॉर्फ? व्हाट इज सॉर्फ? सो गाइस आई वांट टू लेट यू नो कि सॉर्फ क्या है। गूगल मत करो। सॉर्फ इज मेंशन फॉर माय डियर चिप्स, चिप्स रिमूवल एंड क्लीनिंग, चिप्स रिमूवल एंड क्लीनिंग के लिए मेंशन है, ठीक है? तो इसको भी कंसीडर करते हैं, इसलिए ये रिक्वायर्ड है, राइट? All of the above are correct. Okay, got it ना? सब हाँ में हाँ मिला रहे हैं। स्वार्फ किसी ने पूछा भी नहीं कि सर स्वार्फ का मतलब क्या होता है। I repeat once again, स्वार्फ is nothing but what? It is mentioned for the chip removal and cleaning बेटा। So वो फैक्टर भी हमें कंसीडर करना पड़ता है while designing jigs and fixtures, right? Because it can fix as well as it can guide the tool as well, right? Here I go for next one. The widely employed computer architecture for CAD/CAM, computer-aided design and manufacturing application, mainframe based system, mini computer based system, microcomputer based system, workstation based system. You can answer. Last year ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में, इस साल भी आ सकता है। It is none other than what, my dear? It is none other than what बेटा? क्या होगा ये? बोलो रे बाबा। What it should be? Workstation. Very good, Ninja bhai. It is workstation, beta. Workstation is correct. No cutting fluid is normally used while machining. No cutting fluid is required for machining that particular material. Guys, can you tell me the answer for this question? कौन सा होगा? बच्चा पार्टी, please tell me. It is none other than what? हाजी बच्चा। It is none other than what? No cutting fluid is required. Normally use, normally नहीं यूज होता है। बच्चा पार्टी बताओ। कौन सा? कास्ट आयरन। वेरी गुड, कास्ट आयरन ड्यू टू सेल्फ लुब्रिकेंट। वेरी गुड, कास्ट आयरन। Okay, can you tell me one more thing? If I say lubrication in cast iron is of what, my dear? जो lubrication होता है cast iron में, lubrication in cast iron is what, my dear? It is nothing but what? Dry or compress air. Dry or compress air बेटा, ये ध्यान रखना। ड्राई और compress air भी यूज करते हैं, that you have to keep in mind, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ता हूं भी, ठीक? Here I go for next one. A good cutting fluid should have, जो गुड कटिंग फ्लूइड होता है उसमें क्या होता है? लो थर्मल कंडक्टिविटी बिल्कुल नहीं। लो थर्मल कंडक्टिविटी रहेगा तो हीट ट्रांसफर कैसे करेगा, राइट ना? लो थर्मल कंडक्टिविटी तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बस यस, हाई स्पेसिफिक हीट होना चाहिए, राइट माय डियर? इट शुड हैव हाई स्पेसिफिक हीट। व्हाट माय डियर? हाई थर्मल कंडक्टिविटी, right? What else, my dear? What else? Low viscosity and smaller molecular size. Low viscosity, right now? अरे बोलो रे बाबा, viscosity and smaller molecular size. Low viscosity and smaller molecular size. Molecular size, okay? That you have to keep in mind, okay? And one more, that is what, my dear? Chemically stable होना चाहिए, ठीक है? नॉन करेजिव होना चाहिए। नॉन करेजिव हो, नहीं तो करोजन करेगा तो क्या ही मतलब? केमिकली स्टेबल हो, क्योंकि नहीं तो पता चला कि हमने डाला और वो रिएक्ट कर गया वर्कपीस के साथ में। सो केमिकली स्टेबल इज ऑल्सो। एंड इसमें क्या होना चाहिए बेटा? वेटिंग एंड स्प्रेडिंग प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए, राइट? है ना? स्प्रेडिंग की स्प्रेड हो जाए
एंड गीला कर दे, वेटिंग प्रॉपर्टी, स्प्रेडिंग एंड वेटिंग प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड बेटा, या एबिलिटी यू कैन से, ऑर्डरलेस होना चाहिए, और क्या बोल सकते हैं, वोलाटाइल नहीं होना चाहिए, नहीं तो डालोगे धमाका हो जाएगा, ठीक है ना, डालोगे तो धमाका हो जाएगा, तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए. सो दैट मीन्स नंबर 2 इज गोइंग टू बी अ करेक्ट ऑप्शन, राइट. ओके, ये सब प्रॉपर्टीज होनी चाहिए. बट दैट मीन्स एक तो ये देखो जो चीजें मैंने बताई ना, ये सब एक लॉजिक लगा के बताई कि यार मैंने डाला अगर लुब्रिकेंट, तो अगर पूरा इसको वेट नहीं कर रहा तो डेफिनेटली हीट रिमूव नहीं करेगा, तो ये तो हाई होना चाहिए, राइट ना. केमिकल स्टेबल, स्प्रेडिंग, वेटिंग एबिलिटी, ये सब होना चाहिए, राइट बच्चा पार्टी. यस और नो, यस और नो माय डियर, यस. सो गाइस जस्ट वेट अ मिनट, लेट मी फिक्स दिस एरर, वेट, let me fix this error. यार आ चुके हैं, इट्स फिक्स. ओके, सो आई होप यू गॉट इट ना, ये चीजें समझ में आ गई होंगी. सो गाइस नाउ वी कैन टॉक फ्यू थिंग्स अबाउट द एसएससी जेईई जो भी रिजल्ट आया है. सो अगर आप में से कोई क्वालिफाई हुआ है तो प्लीज लेट मी नो. 2019 रिजल्ट्स आ चुके हैं, कट ऑफ पता चल गई होगी आपको. फॉर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल 157 पॉइंट समथिंग. कैन यू बिलीव, मतलब ये बात तो तय होगी. यस, ओके, आई रिपीट वंस अगेन, दैट मीन्स, oh Krishna, oh so sorry dear, that I repeat once again that you might be have seen the results of SSC JE, right? And if I talk about the mechanical, so guys I want to tell you कि इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल का जो कट ऑफ है, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द अनरिजर्व कैटेगरी. सो इफ आई टॉक अबाउट इट, यू नो माय डियर, इट्स कट ऑफ इज व्हाट 157 out of 200. How much? Out of 200. And my dear, if I talk about how many people have called for the mains, vacancies are very less, my dear. Mains के लिए कितने लोगों को कॉल है? From electrical and mechanical, I think 184. 184. It is not from a single branch mechanical. Is this 184 people include what, my dear? Electrical plus mechanical, beta. Electrical plus mechanical. Okay, so that means I repeat once again. See, now see again. I say, अब पढ़ाई तो कैसी करनी पड़ेगी? That if you want to study, then you have to do it at anyhow. So that means आप regular class करो and do as many as question you can. जितना question, you know, you have a book, right? What, my dear, RK Jan, right? You have, and you have RS for me, right? Guys, follow these books, okay? Follow and solve too many questions, my dear. Solve questions, or I'll say only solve whole book. अब अगर आप कर लोगे ना, क्योंकि because see क्या है ना कि if you lose 1 mark, might be the 10 people will do it, and if the 10 people will do it, definitely your rank will be on the after 10 people. So might be you will pay to get into the mains. So I'll suggest, so don't, you know, kind of don't put any kind of a lack from your side. So it's better you should try to solve each and every question as much as you can. Don't solve the basic questions like, see, what is mean by open system. If I talk about thermal science, then what is mean by open system? Don't solve this kind of questions, because this question you know that, right? Solve those questions, those who are new to you. जो क्वेश्चन नए हैं आपके लिए, उसको बस सॉल्व करना बेटा. जो क्वेश्चन नए हैं, निहारिका, सारिका, नीलम, जितनी भी लड़कियां हैं, सुन लो ध्यान से. जो क्वेश्चन आपके लिए नए हैं, ट्राई टू सॉल्व न्यू क्वेश्चंस, सो दैट व्हाट ना, क्या होगा इससे, दैट यू विल डेफिनेटली कम टू नो वेयर यू आर लैकिंग. सो यू हैव टू स्टडी दैट पार्ट ओनली, राइट? ओके, so no, you see, when you are solving the questions from the RK Jain or RS Khurmi, right now, if you are solving the question from RK Jain or RS Khurmi, when you are going to solve it, जब आप solve कर रहे हो, तो definitely आपके दिमाग में एक चीज आएगी कि यार मैंने पढ़ा तो ये है और इसमें लिखा ये है. मेरी बात समझ रहे हो? इसमें लिखा तो ये है और मेरे को बताया ये गया कि ये भाई ये कैसे है. तो वो क्वेश्चन को आपने काउंटर करना है मेरे साथ. डेफिनेटली आई विल रिप्लाई. मैं ये नहीं बोलता कि मैं तुरंत रिप्लाई करूंगा, बट रिप्लाई definitely I will reply.
क्योंकि बेटा बहुत दिक्कत है। मैंने जो कट ऑफ देखा 157, व्हाट आई एक्सपेक्टिंग, एक स्टूडेंट है वाईटी पे ही है, उसके आ रहे थे 151 एंड आई अश्योर हिम कि बेटा तुम लिख रहोगे, मेंस लिखोगे, ही नॉट गेट द कॉल। उसको कॉल नहीं आई है मेंस बिकॉज द कट ऑफ इज 157। ओके ओके सर, इस बार कट ऑफ जाएगा 150, आई से 150 प्लस ही मान के चलो। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जब मैंने एनालिसिस की थी, आप एनालिसिस दिखा के देख लो, अक्टूबर नवंबर महीने का वीडियो है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कि कट ऑफ होगी 145 टू 155 के बीच में एंड प्लस माइनस 5 मार्क्स बोला था मैंने। कट ऑफ आई कितनी बेटा? 157 आई है। कितनी आई? 157। सो दैट्स व्हाई, वही मैं चीज बोल रहा हूं, इवनिंग टाइम नेटवर्क वाज वेरी बिजी। इवनिंग टाइम नेटवर्क वाज वेरी बिजी। आई एम नॉट गेटिंग एग्जैक्टली what do you mean to say? Network was, no, I don't have any idea, Sam. What about vacancies? I think vacancies very less, 9 I think. No, it's a result of 2019 I'm talking about. 2020 paper you are going to face on the March. For those you are preparing, अभी 2020 का पेपर होगा मार्च 2021 में, and the date was 22 March, right? जो रिजल्ट आया है वो 2019 का है बेटा। द रिजल्ट आई एम टॉकिंग अबाउट वो है एसएससी जेई रिजल्ट 2019 जो कल आया है, yesterday, and it is not final result, it is of result of what? Prelims. I'm talking about prelims, my dear. Cut off for unreserved for electrical and mechanical, it is 157 beta. Daily at least 2 sections in mechanical, 157. Electrical mechanical, Simranjeet. We don't have any idea, Omkar, I don't have any idea कि कितनी वैकेंसीज है, but I can assure you कि competition is very tough. अब पहले जैसा नहीं रहा कि इतना पढ़ लिया तो हो गया, निकल जाएगा कंपटीशन, अब नहीं निकलेगा, अब पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। Will try my best, Krishna Murthy, will try कि यार मैं कर सकूं वो, I will try my best कि that I will try to provide you two class per day. I will try and I will talk to my routine and after that we'll let you know. Okay? Do you have any feedbacks so that I can implement in the class so that you can get a better output? Do you have any output? Yes, my dear. Can you tell me? Omkar, Krishna, Simranjeet. Okay, morning PYQ questions help for exams. Okay. Okay, what about any other suggestion, guys? Next time question numbers. Okay. But I want to tell you that when we have decided this particular course, we are already done the material का editing हो चुका होता है, slides has been already prepared, right? We are coming with already plan way, right? ऐसे नहीं होता कि नहीं उठाया ये सब्जेक्ट लेना, सब कुछ प्लान होता है पहले से, ठीक है ना, कि ये सब्जेक्ट इस दिन लेंगे। एंड गाइस आई वांट टू टेल यू कि दोज हु हैव जॉइंड फर्स्ट टाइम, गाइस आई वांट टू टेल यू 4 PM वी हैव डेली क्लास, राइट? एंड आई वांट टू टेल यू 12 बजे किसकी क्लास होती है? रीजनिंग की बेटा। एंड आई वांट टू टेल यू कि 1 बजे किसकी क्लास होती है? जीएस की, बाय प्रियंका मैम। सो गाइस डोंट फॉरगेट टू अटेंड द क्लास ऑफ रीजनिंग एट 12 noon बाय परवीन सर। एंड जीएस का बैच लेकर आती है बेटा प्रियंका मैम, एंड रीजनिंग का मैंने बता ही दिया परवीन सर लेकर आएंगे, परवीन सर। एंड मेरी क्लास होगी 4 PM डेली, एंड टुमारो सब्जेक्ट विल बी अगेन प्रोडक्शन पार्ट 2। प्रोडक्शन पार्ट 2 विल बी टुमारो माय डियर। ओके, पीवाईक्यू स्टार्ट करें। ओके, पीवाईक्यू 2019 कितने नंबर का आया था? यहां मतलब इसमें से 42 मार्क्स, 42 नंबर। जीएस टाइमिंग इज 1 PM, आई थिंक 1 PM इज अ GS reasoning by Parveen sir at 12 noon beta, 12 noon। and I want to tell you my class will be at daily at 4 PM beta, and tomorrow's topic will be what, my dear? Production part 2, I repeat,
हाँ, इतने मार्क्स फ्रॉम PYQ सर, शौक लग रहा है? No, GS will not be at 5:30. The time has been changed, I think 1 p.m. now. It's 1 p.m. now, beta. Okay, today's, I think today, okay. I think GS timing today's, let me check, okay. Let me check, my dear. Let me check, I'll tell you time. Don't worry, yes. Today's timing is 5:30. Here I'm sharing the link as well. After this class, here I have shared the link as well, my dear. After this class, you have a class after 15 minutes for the GS Krishna. 5:30 p.m. I have already shared the link as well. Technical is 3 p.m. maybe easy watch. Okay. सरोज अरोरा, गेट का कोर्स कब शुरू हो रहा है? सरोज अरोरा, I want to tell you, Saroj ji, that I want to tell you, GATE has been already started, beta. If you want to fill the form for GATE 2022, my dear, you can just click on the below link. Description में वीडियो का लिंक होगा, उस पे जाओ, GATE 2022 लिखा होगा, फॉर्म भरो, जो भी क्वेरीज होंगी सॉर्टेड हो जाएंगी बेटा. Okay, and if you don't get it, please get back to me. Rajasthan के एग्जाम डेट अप्रॉक्स, इट मे बी इन द मंथ ऑफ, माय डियर, April or May, but I thought it may be at the end of April last week or first week of May, my dear. But I cannot say surely कि इतने पे ही होगा. Okay, so it's time to leave now. Ninda bhai, yes, anybody have any valuable feedback? कोई और वैल्यूएबल फीडबैक देना चाहेगा बेटा? ओके, मैक्सिमम क्वेश्चंस विद इन लेस टाइम. सो दैट ओमकार सेड कि सर मैक्सिमम क्वेश्चंस कराए कम टाइम में, ऐसा नहीं हो रहा है. ओके, सो गाइस, विल सी इन द नेक्स्ट क्लास देन. ठीक है, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम कंटेंट देकर आपको लाभान्वित किया जाए. ठीक है बच्चा पार्टी? ओके. So guys, you are most welcome. So thank you so much for your patience and listening very carefully. We'll see you in the next class. So guys, take care. Stay tuned with the testbook.com. Don't forget to attend the class after me. That is what? GS. General Studies. 100 questions in 60 minutes. Okay. So that means in that you'll miss the explanation part, my dear. Because it's me, it's very easy. Okay. So guys, thank you. So Jai Hind, Jai Bharati. Take care of yourself. Stay happy. Have a happy learning and stay tuned with the testbook.com.